growing there. But generally, we like to plan it out ahead of time. Maybe we do this in our head, like a mental map, or we do it on paper. And so if we're looking at a site, maybe this is our property here, something like that. Usually we have square boundaries in today's society, but that's not how nature works, right? Maybe there's a stream meandering in this way. So that's our waterway, right? And we have our farmhouse set up here. And there's generally a slope. Like this is at a higher elevation, like this is a hill, and it's coming down like this. Does that make sense? So this is like our baseline. Then we want to think about how are we going to put in the plants here. Any questions? No? Okay. So there's a couple of different concepts. When you think of food waste, if you put a lot of wood and other things into that, it will reduce that smell. So it's important to think about the carbon and nitrogen ratio. I don't know if you've learned about this, so maybe I won't go into too much detail, but you need a good mixture of the food scraps and the extra, sort of think of it as like a bedding material, what you put on underneath. So I like to do it in layers when I'm doing my compost. So I'll start with a layer of sawdust or grass clippings, then put a bunch of food on top of that, and then put another layer of sawdust or grass clippings on top. So the dry parts are around the wet parts, kind of like a sandwich. And that'll keep your bacteria that is necessary for digesting that material in a happy place in terms of the temperature and the nutrients that are needed to do that work. So that's composting. We're going to be doing a compost pile somewhere over there along that fence line. You can see over there, there's already a trash pile. So we're going to divide. और जो दूसरी है वो है वाटर, क्योंकि वाटर हमें फसलों के लिए भी यूज़ होता है और हम उसके वाटर के बगैर जिंदा भी नहीं रह सकते हैं। जो ज़ून 4 है वो है जंगल में हमें ज़्यादा जाना भी नहीं पड़ता है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वो है फार्मिंग में 5 जोन्स होते हैं। पहला जोन जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे हमें हमेशा रहना होता है। दूसरा जोन जहाँ पे हमारी सब्जियाँ उगती है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा जोन जहाँ पे ऑर्चर्ड्स होते हैं, हमें कुछ वहाँ से लेना होता है। फोर्थ जोन जहाँ पे फॉरेस्ट होता है, और फिफ्थ जहाँ पे हमें कभी जाना, वहाँ पे कभी जाना होता है, और जो सारे वो इससे राइज होता है Forest where we go for money for a long time, and the sun rises in east and the wind blows in the west. Okay. क्योंकि हमें हमेशा यहीं पर रहते हैं। फिर जून 2 में यहाँ पर हमारी सब्जियाँ उगती हैं या कोई फ्रूट्स जो हमें हमेशा ज़रूरत होती है, यहाँ पर भी हम जाते हैं। ये खाने के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो ज़िंदा रहने के लिए ओब्वियसली ये इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ ये 2nd जोन हमारा है। 3rd जोन हमारा ये कूप है। यहाँ पर हमारी मुर्गियाँ होती हैं जो अंडे देती हैं, जिनसे जो फिर पका के हम खा लेते हैं। फिर 4th जोन में आते हैं हमारा ये ऑर्चर्ड। यहाँ पर हम कुछ बहुत टाइम के बाद जाते हैं और यहाँ से हम कुछ फ्रूट्स लाते हैं, एप्पल, पेयर, कुछ भी। और 5th जोन में हमारा फॉरेस्ट आता है। यहाँ पर हम तब जाते हैं जब हमें ज़रूरत होती है कुछ भी हर्ब्स की, तो ये हमारा फॉरेस्ट है। ये रिवर आता है ये माउंटेन से आता है, ऊपर वाले माउंटेन से, वो यहाँ पर नहीं है। तो सनराइज होता है ईस्ट से और सेट होता है वेस्ट से। ये नॉर्थ डायरेक्शन ऊपर वाली है, साउथ नीचे है, ईस्ट उस साइड से है जहाँ से सनराइज होता है, वेस्ट इस साइड से है जहाँ से ये सन सेट होता है। यहाँ से है ये बैरियर अगेंस्ट विंड। ये हमारा बैरियर है जो विंड को यहाँ पर रोकता है और स्लो डाउन करता है ताकि हमारी फसल खराब ना हो। Good. Including a windbreak, which I really liked. It also had a chicken coop, which was a very creative and unique introduction. The vegetables
rows were detailed. Every row had a different vegetable, and all of the zones were labeled. And the waterway comes from the mountain and is into the area which gives fertilization to the soil. So this team wins!